Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lesson we are going to start textbook lesson 11 The Wolf Cub. In this lesson I will also explain worksheet. First I will read and translate textbook lesson 11 The Wolf Cub. Students, keep in mind that textbook lesson 2, lesson 4, lesson 7 and lesson 9 are not included in our syllabus for class 6. First we should read about the theme of the lesson. This lesson is in the form of story. The story covers the important relationships in one's life and the relationship that everyone has with nature. ये स्टोरी, ये कहानी किसी की भी ज़िंदगी का दूसरे के साथ अहम ताल्लुक़ को शो करती है, बताती है उसके बारे में जो कि इस कुदरत में मौजूद है. फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इज़ द थीम. दोस्ती और ताउन इस लेसन का मरकज़ी ख़याल है. ताउन मीन्स एक दूसरे की मदद करना. इन द थिक ऑफ अ जंगल, घने जंगल में, अ लिटिल बॉय इज़ प्लेइंग विद वुल्फ कब्स. छोटा लड़का भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रहा है. मदर वुल्फ इज़ देयर, भेड़ियों की माँ भी उधर है. शी सेज टू द लिटिल बॉय, उसने छोटे लड़के से कहा, मोगली बी केयरफुल, यू कुड हर्ट योरसेल्फ. मोगली, एहतियात से, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं. मोगली एज एन इन्फेंट हैड बीन फाउंड बाय द वुल्फ इन द जंगल. मोगली को नौखेज़ उम्र में भेड़िए ने इस जंगल में पाया था. शी हैड ब्रॉट हिम अप जस्ट एज शी हैड ब्रॉट अप हर ओन कब्स, उसने इसको अपने बच्चों ही की तरह पाला था. मोगली स्टिल अ बॉय प्लेड विद ऑल द एनिमल्स इन द जंगल. मोगली ने लड़कपन से ही जंगल के जानवरों के साथ खेलना शुरू किया, यानी कि वो लड़कपन में ही जंगल के जानवरों के साथ खेलने लगा. ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त थे. भालू, द बियर, बघीरा, द पैंथर, का, द स्नेक एंड मैनी मंकी फ्रेंड्स. बट चीटो द टाइगर वॉज नॉट अ फ्रेंड. उसके कई दोस्त थे, भालू, बघीरा, का और कई बंदर, मगर चीटो जो कि एक टाइगर था वो उसका दोस्त नहीं था. दे ऑल लव्ड ईच अदर वेरी मच, वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. मोगली हैड ऑलवेज बीन वार्न्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द चीता's टेरिटरी. मोगली को हमेशा ख़बरदार किया जाता था कि वो चीता की दहशत से बच के रहे. चीटो वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट लाइक मोगली. चीटो ताकतवर था और मोगली को पसंद नहीं करता था. ही ऑलवेज वेटेड फॉर अ चांस टू हार्म द बॉय, वो हमेशा इस मौके के इंतज़ार में रहता कि इस लड़के को नुकसान पहुंचा सके. वन डे, एक दिन, वाइल मोगली वॉज प्लेइंग, जब मोगली खेल रहा था, भालू केम रनिंग टू मोगली एंड सेड, भालू दौड़ता हुआ मोगली के पास आया और कहा, मोगली, चीटो इज़ इन अ टेरेबल टेम्पर, चीटो खौफनाक मिजाज में है. ही इज़ गोइंग अराउंड टेलिंग एवरीवन दैट ही वांट्स टू किलिंग यू, वो सबको बताने जा रहा है कि वो आपको कत्ल करना चाहता है. मोगली सेड, मोगली बोला. डोंट वरी भालू, मोगली ने कहा, भालू परेशान मत हो. आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप की हिफाजत कर सकता हूँ. मोगली हैड अ प्लान, इट वॉज टू काउंटर अटैक. मोगली हैड अ प्लान, इट वॉज टू काउंटर अटैक. मोगली ने मंसूबा बनाया, ये जवाबी हमला करने का वक्त था. ही वॉन्टेड टू लेट लूज द वाइल्ड बुल्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑन चीटो, वो चाहता था कि चीटो पर जंगल के भैंसे छोड़ दे. टू डू दिस ही हैड टू कॉर्नर चीटो, इसके लिए वो चीटो को अलग करना चाहता था. ही न्यू, वो जानता था, वेयर चीटो स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कि चीटो अपना वक्त कहाँ पर गुजारता है. इट वॉज ऑन अ स्लोप इन द माउंटेन्स. वो जगह एक ढलान पर थी जो कि माउंटेन्स पहाड़ों में वाक़िया थी. फार फ्रॉम मोगलीज केव, जो कि मोगली के गार से बहुत दूर थी. ही डिड नॉट वॉन्ट चीटो टू स्पॉट हिम बिकॉज दैट वुड बी द एंड ऑफ हिम, वो नहीं चाहता था कि चीटो उसे देखे क्योंकि इससे उसका ख़ात्मा हो सकता है. मोगली थॉट
موگلی نے سوچا I should go around the mountain and to the top without Cheeto seeing me. مجھے جانا چاہیے پہاڑوں کے اطراف پر اور اوپر چڑھنا چاہیے چیٹو کے بنا دیکھے. From the top the bulls can charge at Cheeto. اوپر سے بھینسیں چیٹو پر حملہ کر سکتے ہیں. That evening Mowgli with the help of his friend Kaa gathered 8 wild bulls with the longest and sharpest horns. اسی شام موگلی نے کا کی مدد سے 8 جنگلی بھینسیں اکٹھے کیے جن کے بہت بڑے اور نوکیلے سینگ تھے. He said, شارپیسٹ تیز تلوار بھی ہم بول سکتے ہیں, نوکیلے بھی بول سکتے ہیں. He said, اس نے کہا, Today we will put an end to the reign of terror by Cheeto. آج ہم چیٹو کی دہشت کا اس علاقے میں خاتمہ کر دیں گے. This is my plan. یہ میرا منصوبہ ہے. Mowgli explained to the bulls. موگلی نے بھینسوں کو واضح کیا. Explained واضح کرنا. How he wanted to attack Cheeto. کہ وہ چیٹو پر کس طرح حملہ کرنا چاہتا ہے. As per plan. منصوبے کے مطابق. They circled the mountain. انہوں نے پہاڑوں کا گھیرا کیا, پہاڑوں کے چکر انہوں نے کاٹے. Unnoticed by the slumbering tiger. اور چیٹو کے بنا دیکھے بغیر, ٹائگر کے دیکھے بغیر. Unnoticed by the slumbering tiger. ٹائگر کے بنا دیکھے. Slumbering جو کہ آرام کر رہا تھا, بے خبر تھا. Once they reached the top. پھر وہ اوپر چڑھ گئے. They could see in a clearing a little below rested چیتا. They could see in a clearing a little below rested cheetah. ان کو صاف دکھائی دے رہا تھا چھوٹا سا کہ چیتا وہاں پر آرام کر رہا ہے. Mowgli said. موگلی بولا. Once I give you signal. جب میں آپ کو اشارہ کروں, سگنل اشارہ دوں. Charge together. مل کر حملہ کرو. Any false move. کوئی بھی غلط قدم اگر آپ اٹھاؤ گے. And we could be endangering our lives. تو اس سے ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. Mowgli lifted up his hands, brought it down and shouted, Charge. موگلی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نیچے کیے اور چلایا, Charge. حملہ کریں. The bulls ran down the slope. بھینسیں ڈھلان سے نیچے بھاگنے لگے. Kicking up huge amounts of dust. اور تیزی سے کیا کیا انہوں نے, گرد و غبار کو بڑی مقدار میں اچھالنے لگے. Kicking اچھالنا, ڈسٹ گرد و غبار. Cheetah looked up hearing this thunderous noise. چیتا جو تھا اس نے اوپر دیکھا تاکہ وہ اس گرجدار شور کو سن سکے. He saw the bulls hurtling towards him. اس نے دیکھا کہ بھینسیں اس سے ٹکرانے جا رہے ہیں. He tried to turn and run. وہ مڑا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. But before he knew, لیکن اس کے جاننے سے پہلے, he knew it, the bulls were on top of him. لیکن اس کے جاننے سے پہلے کہ جو بھینسیں ہیں وہ اس کے اوپر ہی ہیں. The bulls pierced Cheeto with their horns and flung him with the momentum of their run. بھینسوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, بھینسوں نے اپنی سینگیں اس میں گھسانا شروع کی. And flung him with the momentum of their run. Flung mean سینگ مارنا, گرانا, اور اس کو گرایا اور اس کے بھاگنے کی حرکت کو ساکن کر دیا. Cheeto was hurled and flung to his death. چیٹو زور زور سے پھینکنے سے, اچھالنے سے اور سینگ مارنے سے کیا ہوا, اپنے انجام کو پہنچ گیا, اس کا خاتمہ ہوا. Mowgli and the bulls proudly went back to announce Cheeto's end to the jungle fox. موگلی اور جو بھینسیں ہیں وہ فخر سے واپس ہوئے تاکہ وہ جنگل کے جانوروں سے چیٹو کے خاتمے کا اعلان کر سکیں. گلوسری. انفینٹ نوخیز, وانٹ خبردار ہونا, ٹریمبل لرزنا, رین علاقہ جہاں پہ بادشاہی کی جاتی ہے, ٹیرر دہشت, تھنڈرس کڑکدار, ہرلڈ زور زور سے پھینکنا. انفینٹ, اے ویری ینگ چائلڈ اور بیبی
or baby. Want, inform someone in advance of a possible danger situation. Tremble, shake as a result of anxiety, excitement, fear. Reign, the period of rule of a monarch. The period of rule of a monarch. Terror, extreme fear. This is word fear. Terror, extreme fear. Thunderous, speak loudly and forcefully or angrily. Hurled, thrown with great force. Worksheet, fill in the blanks. A little Mowgli is playing with wolf cubs. Mowgli had many friends in jungle. Cheeto was strong and did not like Mowgli. Mowgli, with the help of Kaa, gathered 8 wild bulls. Cheeto is in a terrible temper. Second question, write T for true and F for false statement. Cheeto always waited for a chance to harm the boy. True. They had each other very much. False. Cheeto spent most of his time in slope of mountains. True. Mowgli explained to the bulls how he wanted to attack Cheeto. True. The bulls ran down the slope. True. Choose the correct option. Cheeto, the tiger, was not a friend. Wolf brought up Mowgli. Cheeto is in a terrible temper. Kaa gathered 8 wild bulls. Mowgli lifted up his hands. Match column A with column B by using pencil. Match column A with column B by using pencil and write in column C. Mowgli, little boy. Bagheera, panther. Cheeto, tiger. Kaa, snake. Bhalu, bear. Student activity, read the lesson with correct pronunciation and non-vocabulary. Write this work in worksheet. This is letter T. With it, worksheet. Write this work in worksheet. Stay safe at home. God bless you.